Hello friends, this is Rashid Rizwi from Mass Training Solutions. Today I will teach you how to repeat header in MS Word table. Normally हम Excel में header repeat करते हैं using page layout, print, title options. But in MS Word document, when you have table, normally we don't know how to repeat table heading. We normally copy all, table header to all pages manually one by one. So this video will help you how to repeat your header in MS Word table. Let's proceed for it. First, I need some table to be in MS Word. I go to MS Word. I create new document. Control N. I will just I'll just copy ready-made table and paste here. So I have Excel data here. I just copy this and I'll go to Word. I'll paste this. Sorry. Now we have ready-made table here. If you wanted borders also, so before copy we can apply some borders here. This is just some data I have, and then I copy this data and paste in MS Word document, so that now I have ready-made table in front of you. इस टेबल में आपका हेडर जो है आपके सामने ये हेडर है. You can adjust the width of header, that you know how to adjust using mouse. So what I want, I need to repeat this header to all pages. अभी आप प्रीव्यू देखेंगे, कंट्रोल F2 शॉर्टकट टू से प्रीव्यू. आपका जो हेडर है दैट कम्स इन पेज नंबर 1 ओनली. इट डजंट अपीयर इन पेज नंबर 2 and 3. वी वांटेड दिस टू रिपीट इन ऑल पेजेस. इसके लोग क्या करते हैं, मैनुअली दे कॉपी एंड पेस्ट हेडर एंड गो दे एंड पेस्ट नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज. बट ये 2-3 पेजेस है तो ठीक है, काम हो जाएगा. If you have multiple pages, difficult to copy header manually to all pages. So for this, what you can do, you can just simply you need to go to the header page. Header first. So I have clicked my mouse on row number 1 in table. Table के first row में मैंने mouse को click किया and I want to repeat same header to all pages. So first actions जो है जिस हेडर को रिपीट करना है, जिस हेडिंग को, बी इन दैट रो. एंड ऊपर देखेंगे आपके पास में टेबल डिजाइन है और लेआउट है. लेआउट में जाना आपको है, यू हैव टू गो टू लेआउट. फर्स्ट एक्शन, गो टू द रो विच यू वांट टू रिपीट इन ऑल पेजेस एज ए हेडर. सो मुझे रो नंबर 1 को रिपीट करना है. सो आई एम देयर इन रो नंबर 1. आई क्लिक माई माउस, देन आई क्लिक ऑन लेआउट टैब इन रिबन. लेआउट टैब के राइट साइड में वी हैव वन थिंग कॉल here repeat header rows. See, repeat header rows. So first be row number 1 because मुझे row number 1 repeat करना है. And then I'll go to layout tab and I click on repeat header row just once. Now if you check your print preview, control F2, you see आपका header सारे pages में repeat हो चुका है automatically. No need to copy and paste it manually. Even though अगर आप कुछ नया पेज ऑटोमेटिक जाएंगे न्यू पेज में, तो ऑटोमेटिक ये आपका हेडर वहां पे भी चला जाएगा. एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट गो टू द लास्ट पेज and I just say tab. If I say, see, these are blank rows I am inserting, tab hold करके. Now see, automatically header is copied in my new page. This is how we insert. करना क्या है, फर्स्ट आपको आपके माउस को क्लिक करना है हेडर रो में, जो हेडर रिपीट करना है, एंड देन यू गो टू लेआउट टैब ऑफ रिबन, और लेआउट टैब के राइट साइड में रिपीट हेडर रोज जस्ट क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. You can recommend to your friend and colleagues also. You can also watch my Excel videos. You can go to my channel and see we have Excel videos, VBA videos, macros, and MS Word तो है ही है. And we are planning to upload the PPT videos as well. Please write some comments, some suggestions so that I can upload relevant videos for you all. Thank you very much.